Good morning. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to give a lecture on the black aeroplane. This is a chapter which is going to be explained by me. तो चलिए, अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिले। अभी मैं स्टैंडर्ड 10 के लिए जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूं, तो आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो अभी द ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर है। इट्स अ फिक्शन, या फिक्शन है, एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ मिस्ट्री, फेथ एंड डिवाइन हेल्प। ये स्टोरी मिस्ट्री, फेथ और डिवाइन हेल्प क्या है, देखिए। ए पायलट फ्लेw his plane from Paris to London at night. As the plane reaching height, it entered into dark clouds. Okay, a pilot flew his plane from Paris to London at night. As the plane reaching heights, it entered into dark clouds. Next point is the instruments and other parts of the plane stopped working. The pilot became nervous but tried hard to control the plane. Okay, so this is the condition of the story in this fiction. In the meantime, the pilot saw a black aeroplane. The pilot of the other plane gave him signal and guided him to follow his plane. It means the pilot of the other plane gave him signal. It means the other plane's pilot signaled the plane's pilot to follow him. He contacted the airport authorities to give some support, but the radio signal was not working at all. So the radio signal of the plane was not working. Somehow or other, the pilot managed to land at the airport safely, and he was following the other aeroplane, and the other aeroplane's pilot was giving him support to come and land at the airport safely. So it was over there. The control room reported no other plane in the sky that night. When the pilot contacted the airport authority said that there was no plane flew in that night. The pilot thanked God, and at last what had happened? Pilot thanked God. He felt that he was saved by the Almighty. He said that he was saved by the Almighty. The black aeroplane became a mystery, and in the mind of the pilot who was flying from actually Paris to London, he was thinking that where was the black aeroplane? He did not see the black aeroplane, but he saw the signal which had been given by the other pilot. So the story created suspense and mystical element. Mystical element was there, suspense was there. Who was the pilot? What type of plane was there? Why did he signal to this pilot? What was the reason? So many questions were generating in the mind of the
pilot who was flying from Paris to London. The story ends with faith, hope, and divine help. The story ends in the shape of faith, hope, and divine help. It means faith in the God, okay, and a divine help was coming to save the pilot, and the pilot was saved anyhow. So what was the story? The story was that a pilot was flying his plane from Paris to London. All of a sudden, the pilot lost his control over the plane, because as the plane was reaching height, the instruments and the equipments, they were not working at all. The plane was lost in the cloud. In the meantime, he saw another plane who was equally supporting him and giving him signal to follow him. So he followed the plane and landed at London airport safely. So what was the reason? The reason was that he was actually following the signal, and he had confidence, he had faith in God, he had got some other type of temperament while flying the plane. Okay. In the course of time, he got confidence also to follow the other plane. So he followed and he was saved. ये इसका स्टोरी है. कहने का मतलब है कि एक पायलट अपने प्लेन को पेरिस से लंदन उड़ाकर ले जा रहा था. जैसे ही प्लेन हाइट पर पहुंचा, वो ब्लैक क्लाउड में खो गया. हाइट बहुत अधिक थी, तो ये पायलट का जो इक्विपमेंट था प्लेन का, वो कुछ समय के बाद काम करना बंद कर दिया. अब इसको समझ में नहीं आने लगा कि वेयर टू गो. नो डायरेक्शन वाज देयर, कोई डायरेक्शन नहीं था. नो इक्विपमेंट वाज वर्किंग एंड ही वाज जस्ट गोइंग टू डाई. इन द मीन टाइम क्या हुआ कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दिया, एंड वो प्लेन इसको सिग्नल दे रहा था कि आप मेरे को फॉलो करो, हम तुमको सेफली लंदन उतार देंगे. और ये यही हुआ. वो प्लेन को फॉलो किया, और फॉलो करते 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 वो क्या हुआ कि लंदन के एयरपोर्ट पे उतरा. राइट, बिकॉज ही प्रॉमिस्ड हिज फैमिली टू टेक डिनर विद देम. वो उसने अपने फैमिली को प्रॉमिस किया था कि मैं डिनर आपके साथ लूंगा. बट द प्लेन वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड. द प्लेन वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म ऑफ क्लाउड. बट it was God's direction that the plane was saved. तो भगवान ने उसको काफी मदद की. ये एक मिस्ट्री है. मिस्ट्री है होप का, फेथ का, और सबसे बड़ी बात है कि मिस्टिकल एलिमेंट वाज देयर. तो इस तरह वो ब्लैक एरोप्लेन के सिग्नल को फॉलो करते 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 सीधा पहुंच गया लंदन एयरपोर्ट. और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूछा कंट्रोल रूम से कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि नो नो, देयर वाज नो प्लेन इन द स्काई. वो बोला कि स्काई में कोई प्लेन नहीं था. इन द मीन टाइम ही गॉट फेथ दैट ओ आई वाज सेव्ड बाय गॉड. तो उसने फेथ के ऊपर काम किया और उसको लगा कि भगवान ने उसको बचाया है. सो द स्टोरी एंड्स हियर. और ये बताता है कि ये स्टोरी फेथ का है, होप का है. होप वाज देयर टू गो टू लंदन. सो ये फेथ है, होप है, और डिवाइन हेल्प है कि भगवान ने उसको काफी मदद किया और वो अपने घर जाकर फिर सेटिस्फाइड हुआ. तो ये स्टोरी इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आप किसी भी परेशानी में पड़े हैं और आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, तो somehow or other you are going to be helped by God. So this is the exist of the story. I hope कि आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे.
ये एक मेरे तरफ से सपोर्ट है। अगर आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और देखने के बाद बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और आशा है आप लोग ये मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत मेहनत से बनता है और आप लोग का व्यूज़, आप लोग का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस मिले। मैं अभी केवल 10th को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। 10th को मैं फोकस करके बता रहा हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे सपोर्ट से उनका कुछ भला हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई आप लोगों को, और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह करें। थैंक यू।